Good evening. Welcome to Vision of Asia, Voice of the Community, the news you can trust, and events that move and celebrate our very own South Asian community. I'm Nidhi Kathuria, coming to you from our ITV Gold studio in New Jersey. In the news this evening, Guruji's Mandir at Kilmer, New Jersey celebrates Guru Purab. The cast of Suraj Barjatia's Unchai talks about their film in an exclusive interview. Stay with us on Vision of Asia, Voice of the Community for news in detail right after this short break. Guruji Ka Mandir at Kilmer in New Jersey celebrated Guru Purab on November 8th as Guru Nanak Dev Ji Prakash Utsav. Attended by over 500 people, the festive occasion marked the 553rd birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. Guru Parivar enjoyed the soulful satsang of Shabad Kirtan, which were handpicked by Guruji when he was present in his physical form. A sumptuous langar prepared by sevadars of chole bhature, kachoris, piping hot jalebis, dahi bhalle, and sweet dry fruit milk was enjoyed by the devotees. Enjoy the glimpses. मेरा नाम रीटा भंडारी है और आज हम यहाँ पे गुरुजी के मंदिर किलमर मंदिर में हैं, गुरुपुरब मना रहे हैं सबके साथ में। तो आप पहले मुझे ये बताइए, गुरुजी का मंदिर जहाँ पर भी हो दुनिया में, वहाँ पर एक शिव जी की मूर्ति होती है और एक गुरु नानक देव जी की फ़ोटो ज़रूर होती है। इसके पीछे क्या कारण है? गुरुजी एक्चुअली खुद ही महाशिव वो इस धरती पे आए, इसलिए शिव जी का तो वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और गुरुजी की हमेशा बहुत एफ्लिक्शन रही है गुरु नानक के साथ में, पूरी तरह माना गया है उनको, तो इसलिए गुरु नानक और शिव इकट्ठे बैठे होते हैं। और जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में भी बोला गया है, सारे रिलीजन, सारे भगवान एक ही हैं, उसी तरह गुरुजी ने भी हर रिलीजन को कहा कि एवरी रिलीजन इज़ फाइन, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, but everybody is welcome in Guruji's darbar, because this is a darbar where it's a darbar of soul, you know, आपकी श्रद्धा की बात है वहाँ पे, आपका attitude and gratitude combined together is where Guruji takes you in this darbar. No matter what faith you follow, you are just as fine as anybody else, as long as you believe and have full faith in your own faith. भरोसे पे भरोसा, ये गुरुजी सिखाते हैं हमें। तो आज हम गुरु नानक जी का जन्मदिन मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं आप? मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आंटीज़ हैं और सेवा कर रही हैं। सेवा हो रही है। तो गुरुजी के दरबार में हमेशा कई तरह के अमृत प्रसाद मिलते हैं और जल प्रसाद होता है, चाय प्रसाद होता है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा लंगर प्रसाद बन रहा है, आंटीज़ बनाती हैं। देख रहे हैं आप कितनी सफाई से और शांति से, there is no commotion, there is peace and lot of श्रद्धा that goes in making of लंगर प्रसाद। ये अमृत है और इसमें अभी भी गुरुजी की सारी रेसिपीज़ फॉलो करी जाती हैं। तो गुरुजी के फॉलोअर्स मानते हैं क्योंकि एक एक कण में इसमें जो है there is a blessing, there is अमृत, and गुरुजी has cured absolutely horrible, terrible and most unknown diseases, totally cured people of that just through their prasad. You know, कहते हैं जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो तू कैसा पावे, और वो तो गुरुजी के बारे में बिल्कुल ठीक है। एक बारी जब आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो आपके सर पर उनका हाथ आ जाता है। उसके बाद या तो कष्ट आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो सिर्फ 10% आएगा, और वो 10% भी कई बारी आपको निचोड़ के रख देता है। इट इज़ रियली अ टेस्टिंग टाइम, बट हाउ यू जस्ट come across it, it's always unbelievable, because through the power of that faith in Guruji, you get so much positivity, so much strength, that every big problem becomes a very minuscule of a problem. गुरुजी की बस यही महिमा मैं बता सकती हूँ।
थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। माय प्लेजर। जय गुरु जी। जी पूनम, आप बताइए आज आप यहाँ पर गुरु पूरब कैसे मना रही हैं? बस गुरु जी के साथ और सब प्यारी संगत के साथ। इट्स सच अ ब्यूटीफुल इवेंट एंड एवरीथिंग एट गुरु जी's टेम्पल इज ऑलवेज ऑसम। आई भी फील कि गुरु जी हैं यहाँ हमारे साथ, हम सबके साथ, और सब प्यार से मिलकर मनाते हैं, तो इट्स ऑलवेज वेरी गुड। थैंक यू। मलिका, आज आप यहाँ पे हैं गुरु जी के मंदिर में और गुरु पूरब का त्योहार मना रही हैं, कैसे मनता है यहाँ पर? यहाँ पर एक्चुअली सारे इवेंट्स मनाए जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मनाए जाते हैं। यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन टीम इज़ वेरी गुड, उनकी यूनिटी बहुत अच्छी है, और इस टेंपल में जितने भी संगत आती है दे आर ऑलवेज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। सारे सेवक यहाँ पे पूरे यूनिटी के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैनेज करते हैं। तो लास्ट यहाँ पे इवेंट हुआ था दिवाली, और आज है गुरु पूरब, जो कि बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। जी थैंक यू। थैंक यू। हेमंत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। बताइए आज आप गुरु पूरब यहाँ पर कैसे स्पेशल वे में मना रहे हैं? जैसा कि ये सबको पता है, धरती पर स्वर्ग, ये दरबार हमारे मालिक का यहाँ पर विराजमान है एडिसन में, किल्मर रोड, 6 किल्मर रोड। तो हम सभी अपने जो घर से दूर हैं यहाँ यूएस में, सब मिलजुल के हम यहाँ सारे त्यौहार मनाते हैं। साल में हम न्यू ईयर डे से शुरू करते हैं, न्यू ईयर के बाद लोहड़ी, फिर शिवरात्रि, बैसाखी, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली, गुरु नानक बर्थडे, फिर 5 हमारे इवेंट होते हैं गुरुजी के स्पेशल, जिनमें पहला होता है बैसाखी, पहला शिवरात्रि साल में, दूसरा बैसाखी, फिर तीसरा हमारा गुरुजी की चोला जिस दिन उन्होंने त्यागा था 31 मई, उस दिन हम उनकी पुण्य तिथि मनाते हैं। उसके बाद गुरुजी का बर्थडे जो हमारे लिए बहुत अपार खुशियाँ लेकर आता है, जुलाई 7, और उसके बाद गुरु पूर्णिमा। तो ये सारे, और एंड में हम दशहरे पे गरबा भी करते हैं, और न्यू ईयर ईव पे हम भंगड़ा भी करते हैं। तो गुरुजी के दरबार में हम सब मिलजुल के ऐश करते हैं, आप भी हमारे साथ ही होते हैं। तो मेरी तो सभी यूएस में रहने वाले सभी सनातन धर्म को मानने वाले, सिख पंथ को मानने वाले सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, आप एक बार आएँ, मत्था टेकें और यहाँ का आनंद लें और देखें। जैसा कि हम बोलते हैं हमेशा, धरती पर स्वर्ग दरबार हमारे गुरुजी का। तो सभी को मेरी तरफ से गुरुपुरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी आएँ और आप सब भी ब्लेसिंग्स लें। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शेरू जी, आप यहाँ पे बहुत, मैं देख रही हूँ कि अच्छी तरह से इतने सारे लोग हैं, बच्चे हैं, हर उम्र के लोग हैं, और यहाँ पर गुरु पूरब मना रहे हैं। इसकी क्या स्पेशल, व्हाट इज़ द महत्व बिहाइंड दिस, स्पेशली इन गुरुजी's मंदिर? सो अब आप देखते हैं, जब आप इधर आते हैं, एक जगह गुरु नानक देव जी हैं, एक जगह शिव जी हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि गुरु जी दोनों के फॉर्मेशन थे, तो इसलिए हम गुरु नानक देव जी का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और लाइक अंकल सेड कि एक परिवार है ये, जिसमें लोग आके जुड़ते हैं, बिकॉज ये लोनलीनेस जगह है, तो दे कम, दे जॉइन एंड वी सेलिब्रेट। 2 weeks ago हमने दिवाली सेलिब्रेट करी थी। वी हैड ओवर 700 संगत joining us, and we did fireworks, we did stalls, we did this, Golgappa live. So we're just like a family community. And you know, in regular mandir what happens is you go, you don't interact. Here हम तीन सत्संग करते हैं, तो 3 दिन इंटरेक्शन होती है। अपनी फैमिली से ज़्यादा इंटरेक्शन इधर होती है हमारे यहाँ। तो ये एक संगत परिवार आपका बना जी, हुआ बिल्कुल, संगत जिनके साथ परिवार। आप सारे फेस्टिवल्स मनाते सारे हैं। फेस्टिवल मनाते हैं, हाँ जी। एंड यू नो, गुरुजी करें कि गुरुजी कहते थे कि आप मंदिर मेरे तभी आते हो जब मैं बुलाऊं। तो आई विश गुरुजी सबको बुलाएं इस मंदिर में, और सबको यहाँ पे आके दर्शन दें गुरुजी, और ब्लेसिंग दें सबको। आप बताइए, आज गुरु पूरब है, कुछ ऐसा शब्द जो गुरु जी और गुरु नानक देव जी के लिए बिल्कुल फिट बैठे आज के ओकेजन पर? ऐसा शब्द आपको बताऊं, गुरु नानक जी की पहले 3 शिक्षाएं बता देता हूं, तब तक उनका कोई शब्द भी याद आ जाएगा। कि गुरु नानक का संदेश में सबसे बड़ा संदेश यही है कि उनकी 3 शिक्षाएं, वो बोलते थे कि इरत करो कि आप एक अच्छा काम करें, और काम ऐसा हो कि जो धर्म पूर्वक किया जाए। दूसरा उनका ये था कि सिमरन करो ईश्वर का, प्रभु नाम का आप जाप करते रहिए। और तीसरा वंड छको, माने जो है आपके साथ, जो और बाकी अपने ज़रूरतमंदों में अपने लोगों के साथ बांटे। और
शब्द मुझे याद आता, हम लोग बहुत छोटे थे, शायद 5-6 साल के होंगे। तो ईश्वर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपया, कौन भले कौन मंदे। Director Suraj Barjatia's latest film Unchai follows the lives of 3 senior citizens and close friends trek to the Everest base camp, battling their physical limitations. The cast includes Amitabh Bachchan, Danny Denzongpa, Anupam Kher, Baman Irani, Neena Gupta, Pariniti Chopra, Nafisa Ali and Sarika. The film is set to release on big screens this Friday on November 11th. I spoke to some of the cast members of Unchai about their experiences and journey through the film. Take a look. So, my first question is, to climb the Everest is a task not those with faint hearts or fragile willpower can accomplish. Yet, we see in the trailer of Unchai that you guys will be able to do just that. And how you execute that is what we will be watching in the movie. My question is, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किल आई है जो आपको पहाड़ चढ़ने जैसी लगी हो? Name the Everest in your life that you are proud of. Firstly, I say that it's not for the faint-hearted and fragile. I think we are all these characters are faint-hearted and fragile and weak, and even in spite of that, we attempt to go to the Everest base camp. That's the point of this film. If you have a strong heart and if you're extremely fit, yeah, by all means, you can go to the Everest base camp. But if you are not, then it becomes even more insurmountable. And every good story should be that the characters takes up a task that is insurmountable. However, I'm going to tell you in a nutshell of my little Unchai. I think Unchai has been my Unchai. Oh. Yeah. That's the biggest challenge for you so far? In your life, professional, personal, however? I don't know if it's a challenge as much as I feel I have. Unchai is not about just the challenge. Unchai is about doing something that makes you feel that you've displayed the best version of yourself. And you've made that change. So yes, I feel the best version of myself as a human being, hopefully as an actor. I'm no one going to judge on my own performance. But yes, I think that Unchai has been my Unchai, and then we will start another journey later. Great. So you asked us about what is your the Everest in your life? मैं सोच रही थी कि लाइफ ही एवरेस्ट जैसा मुश्किल है, पूरी लाइफ। वो गाना है ना, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते। तो लिविंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। Every day, there's never a dull day. So I think that's every day is a Everest wala drive. For me, I have this great fear of illnesses, and to make this film in peak pandemic has been my biggest challenge. Not only for me, I have fear of anyone falling ill. I carry these medicines with me everywhere. So I carry for the whole unit. And my first challenge was when I had to go for the recce of this film to Delhi. And it was the first week after the wave had just gone. And I reached, that night I was wondering whether to go, not go. I was also wishing koi bahana mil jaye, ki flight cancel ho jaye. But nahi hui cancel. We reached airport and it was dead. There was no, it looked like Frankfurt ka koi ek suburb ka. And I reached the hotel in Delhi. And the manager was there like this, and he said, "Thank you for coming. Pichle hafte sab yahan piche the." Wow. So for me, my biggest challenge is to make Unchai the biggest fear of illnesses in people with this cast. My biggest fear is flying. The fear of flying. And in this film, this gentleman made me go on helicopter rides for almost 1.5 hours. Wow. And it was a petrifying experience, but I did it. Today, when I see those shots in a trailer or in a film, I say, "Oh my God, this is what I did." So I think it depends on what are you getting out of it. You get out of it because my love for him, or my love for Rashri,
and it's not thankfulness. It is also belief. Mm-hmm. In some, his belief had to be sort of underlined by our fears of life. Mm-hmm. Everest तो बदलते रहते हैं. When I first left my home at the age of 19, मुझे पता नहीं था, छोटे से शहर में रहता था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का लड़का, अंग्रेजी हिंदी मीडियम स्कूल में, और मैं ड्रामा स्कूल में पहले दिन गया, हॉस्टल में रहा, वहाँ रैगिंग हुई, फिर बहुत अलग अलग तरीके से एवरेस्ट होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से. By speaking in an English language film or an English language series, that is the biggest Everest, I think, in Hindi. When I was part of New Amsterdam, I had to say those medical terms. Tongue used to reach my ears from outside, trying to sort of pronounce those words. So I think that's what people will identify with, not necessarily people of certain age. Got it. Everybody will see their own Everest, and everybody will say, "This is what I can achieve." Wonderful. Well said. Sarika, do you? I think Everest and life are shifting. You know, it's so much like a computer game where you play, and it's that never-ending game, and you have to keep climbing. Then you say, "छोटी पहाड़ी है," फिर आप क्रॉस करते हैं, आपका स्कोर अच्छा हो जाता है, suddenly बढ़ जाता है. It's the never-ending thing, and that's what keeps us going, is to have new targets, new heights that you want to achieve in spheres of your life. So for me, it's a shifting thing. Well said. In terms of logistics, how challenging was the shoot of this film? Acclimatization, strength training with a real instructor, the part that will be played by Pariniti in the film? Actually, we took 3-4 months to prepare for this shoot. All the possible trek leaders were in conversation with us. all the guides were in conversation, and I was very, very careful to know that what can go wrong, because I had to put a full stop there. And in India, we don't have such treks, you know, so all the possible videos we saw, then I sent a team to check it out, to how safety, you know, from safety point of view. So I got all the inputs from there. Then I went myself, and I'm very proud of it, because I went myself everywhere. So I climbed everything, and then I realized that it's all about acclimatization. So you guys were able to reach the base camp? No, I mean, some of us did go, but we went as far as we could. We shot till 13,000. Couple of thousand feet off the base camp. Yeah, because also the possibility of shooting is not available there. Yeah, possible. Otherwise, we would have gone. Yeah. So in terms of, you see the lot of films of late in India, they are facing the backlash in terms of poor VFX. I don't want to name the films, but in terms of percentage, how much is the real versus the VFX in your film? So it's always, everything is almost real, except some portions where it's not physically possible to shoot and to get that impact. We have used some of our crew flew down to the EVC and took those mountains, and we put it. But majority of the Everest is from where we got people. Yeah. We've taken actual Everest, we've gone, we've taken from far, because the beauty comes from far as much as. Maybe let's wrap up, please. Thanks. Okay. So one question, why should people go and watch Uchai? Last question. That's All a of long you. answer. I can give you 1,000 reasons why should Give me one best reason. Because people who believe in goodness, they should watch. People who believe in relationship, people who believe in friendship, people who believe in entertainment, people who believe in Rajshri for 75 years, they have kept on in values system alive. They should watch it. Okay. Thank you. Thank you so much.
Continuing with the news on entertainment on ITV Gold, enjoy Apna Sapna Money Money starring Jackie Shroff, Sunil Shetty and Shreyas Talpare in the family movie night this Friday at 8:30 p.m. EST. Watch Yadein starring Jackie Shroff, Hrithik Roshan and Kareena Kapoor this Saturday at 1 p.m. EST. Reserve your Sunday at 3 p.m. EST for Sunny Deol's Right Ya Wrong, also starring Konkona Sen Sharma and Irfan Khan. And that's a wrap on Vision of Asia, Voice of the Community tonight. Send us your suggestions and community news that you would like us to cover for our print and television coverage at events@itvgold.com. Follow us on our Facebook handle at ITV Gold, subscribe to our YouTube channel, and pick up a free copy of Desi Talk if you're in the Tri-State or in the Chicago area for community news, entertainment, and events in the U.S. You can also read the News India Times newspaper online at www.newsindiatimes.com or subscribe to the hard copy by calling 212-675-7515. This is Nidhi Kathuria signing off.